No stress, you can go. That you take your own struggle, you need your own struggle, and if people want to help you, then they come and they help you on your terms. But do not come and disturb our program. But my people are getting killed, they're getting raped, they're being destined for genocide. And we arranged this program, and we are being helped by our Hindu friends, and our Dalit friends, and our Jewish friends, and our Christian friends. So some of you cannot come here and lay guilt trip on us. You know, all this program which has given so much of hard work is being destroyed. First because the police will not let us use the generator, and then you come and disturb us. How dare you disturb us? How dare you? When my people are being marked for genocide, come and hold our hands, wash our tears, stand shoulder to shoulder, and I will appreciate that. I had to come before my turn because I saw how much disturbance is going on. You know, go and read about Malcolm X, he's my hero. He's our hero. He's our Muslim's hero. And he taught us how to fight. And we are fighting in good stead. And we will respect ourselves first. And we are grateful to those who came and helped us. Thank you so very much. हाँ देखा मोड़े जाट बहुत बड़ी तादाद जो प्रोटेस्ट किया जा रहा 26 जनवरी का दिन जिस दिन भारतीय हुकूमत जी साडी घोषणा करती है कि संविधान लागू होया जो सिख मुसलमान दलित भारत के घट गिणतियां इस काले संविधान नहीं मानदियां क्योंकि इस दिन घट गिणतियां गुलाम बना लिया गया खास करके सिखां क्योंकि बहुत बड़े बड़े वादे किए गए सन कि तुहानू एक बहुत बड़ा खिता दिता जाएगा सिख कौम की जिससे अपने धर्म मुताबिक सुख सहूलतां मना सकोगे और अपने धर्म को मन सकोगे। तो अज भारतीय वैसी अगे भारतीय संविधान ना मनने की जी गल आ
ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਉਹ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਜੁੜੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਕਵਾਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਕਵਾਕਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ UK ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਰਕਵਾਕਰਨ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਟੋਟੇ ਹੋਣ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। आज इंडियन टेररिस्ट नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पर 63 एक इंडियन कॉन्सुलेट के सामने जमा हुए हैं। हम दुनिया से मुतालबा कर रहे हैं, हम अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा कर रहे हैं कि CAA और इंडियन एक्ट जो इमिग्रेशन के खिलाफ उन्होंने पास किया, खालिस्तान के अंदर जो जुल्म कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म कर रहे हैं, हम दुनिया वालों को ये बात कहना चाहते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। आपको ये कत्ल गारत, ये खून खराबा नजर नहीं आ रहा है। दुनिया तबाह हो रही है। इंडिया के अंदर वो नरेंद्र मोदी जो जमहूरियत का ड्रामा रचाकर इंडिया के अंदर लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है, हम उसकी आज यहाँ पर पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा से, हम अक़वाम आलम से ये मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा अपनी आंखें खोलें। नरेंद्र मोदी जो टेररिस्ट है इसको साफ करवाएं कि वो कश्मीरियों का कत्ल करना बंद करे, वो सिखों का कत्ल करना बंद करे, वो मुसलमानों के खिलाफ जो एक्ट उसने इंडिया के रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ पास किया है उसको ख़त्म करे। मैं हैरान होता हूँ, दुनिया खामोश है, दुनिया तमाशाई बनी हुई है। आप कब जागेंगे, कब ये देखेंगे? आपको ये जुल्म क्यों नहीं नजर आ रहा? आपको कश्मीर के अंदर माए और बच्चे कत्ल होते हुए नजर नहीं आ रहे, जो कि आज 300 दिन जो आज 6 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं, वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। आज एक नया ड्रामा हिंदुस्तान के अंदर शुरू करके मकबूजा कश्मीर की उस आवाज़ को दबाने के लिए खालिस्तान के ऊपर जुल्म और सितम किया जा रहा है और लोगों के ऊपर जुल्म से हम अक़वाम आलम से मुतालबा करते हैं कि इंडिया को, नरेंद्र मोदी को जो है वो स्टॉप किया जाए ताकि वो ये उस खित्ते के अंदर ये जुल्म बंद करे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। India come 6 months, 6 months, 6 months. The whole chapter on you. The whole chapter.
ਸੋਚ ਤੇ ਚਾਹ ਆ ਗਈ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀਰਿਆ ਤੇਰੀ 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 ਸੋਚ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ 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 India out of next command ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਹੋਇਆ हमका एंजॉय करते हो मार रहते मोदी आजादी 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 अम्बेडकर की आजादी 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 And the journalist asked him what he thinks about this. You know what this man says? The man who was the prime minister for the largest democracy, so-called democracy. You know what he says? He says every action has a reaction. The journalist corrected him and said, Mr. Modi, you're wrong. Every action has an opposite and equal reaction. Is this equal where 200 women is being raped? Is this an equal reaction? I want to close with one of the drafters of the Constitution of India. His name was Aminbad. He said, I want everyone to listen, please. He said that democracy is like the top soil of Indian soil. Democracy is like the top dressing of Indian soil. And essentially, India is not a democracy. India is immune to democracy. Ask yourself, is this a long-running agenda that we are seeing that certain hatred is coming to reality? We are here to stop this. What do we want? We want justice. What do we want? We want them to release the 1,100 boys that they arrested and disappeared from Kashmir. We want them to stop the raping of our women in Kashmir. We want them to stop arresting the leaders in Kashmir. We want them to stop this, and we will use this podium of the United Nations and the podium of the power of the United States to stop the BJP. Thank you very much. We are changing the... We want to face the other side. Please come this side. We will be moving the stage. We want justice. We want justice. We want
Dominican Express, don't leave home without. Standing up against Russia, standing up against the Modi Shah, Suri Sarkar, that is carrying out this genocide. Can't take a break. Zindabad, Zindabad. Zindabad, 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 Zindabad. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. Go back, 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 go back. Murdabad, Murdabad. Murdabad, Murdabad. Murdabad, Murdabad. Murdabad, Murdabad. Murdabad, Murdabad. Murdabad, Murdabad, Murdabad. Murdabad, Murdabad, Murdabad. Murdabad, Murdabad. UP Police Murdabad, Murdabad, Murdabad. Murdabad, Murdabad. Odisha Murdabad, Murdabad, Murdabad. Murdabad, Murdabad, Murdabad. हम लड़ेंगे चोरों से, 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 हम लड़ेंगे चोरों से. मोदी शाह चोर है, चोर है, चोर है. मोदी शाह चोर है, चोर है, चोर है. दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. बीजेपी आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. बीजेपी आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. दिल्ली पुलिस चोर है, चोर है, चोर है. यूपी पुलिस चोर है, चोर है, चोर है. दिल्ली पुलिस चोर है, चोर है, चोर है. यूपी पुलिस चोर है, चोर है, चोर है. Yes,
Japanese fascists invaded some parts of Asia, people stood up around the world against them. And I'm encouraged to see people do it again. Because it's really true what they say. The people united can never be defeated. So power to the people. Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad! Thank you very much. It's this way. I'm going to say if we have some of our speakers there lost in the crowd, I'm going to ask for those conductors have it. Or if you are a speaker, if I contacted you before, you can come to this side of the stage. Come to this side of the stage and see me, and I will see you up to speak. So I'm looking for Sitaram Mahe. Sitaram Mahe. If you're there, come to the side of the stage. Dr. Chuck Chesnavich from the Westchester Coalition Against Islamophobia. Please come to the side of the stage. I'm looking for Salman Sheikh. Salman Sheikh, if you are here, come to the side of the stage. You kind of don't really see him talking, but it's like you know things like this kind of stuff. Yeah, it's cool. Okay, but be safe. Be safe. Get inside the fence. किसी को जाना होता ठीक है. That's what I do when I'm busy. हाँ, गया था. So basically they wanted to cut short the whole democracy by putting the new laws. And bypasses democracy. Bypasses. So our constitution talks about we the people and secular state. So they wanted to take out the secular state there. So that's what they are trying to do. So currently what they do is they have passed an act which eliminates the minorities, which eliminates the Dalits, all those people. So larger impact of it is that the democracy is no longer the democracy. You have seen a lot of internet shutdowns there, people are dying, so police has come into action, all these things are happening. Please cut them I want to be that. I'm going to be that.
दस बोले थे या गराज में ले लेते हैं मैं तो तब ढूंढ लेंगे इट डजंट लुक लाइक कि वो अब हो गए कामयाब का नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का करना चाहिए Monday நம்மளுக்கு They got a rule inside if you want to go inside. India, right now, don't want an LPN. What I'm going to talk about is out here. Look at the diversity we have here. We have Muslims, we have Hindus, we have Sikhs, we have Christians, we have Dalits, we have every person from every walk of life. I represent Indian American Muslim Council, Boston chapter. I'm the chapter president and the board member, and I'm proud to be here, proud to be among all of you. New York, this is where the energy comes from. Big Apple, this is the one. New York City, everything starts. Thank you so much for coming. One thing I'll tell you, you can observe me right now. I'm wearing Shalwar Kurta in January. In the winter month of January, Shalwar Kurta. You know why? Because
the Prime Minister of India who represents 135 million people stands in the street, identify these people, but the clothes they are wearing very I'm proud to mention that I don't want to be racist. I don't want to see मैं तो भूल भी गया अब as a human being, and as such, we need to be expelled. Half of the population, 700,000 people were expelled, were kicked out of their land to make No, 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 no,